So this is an orientation class for economics honors students and those who are pursuing economics honors from Delhi University. And I'm conducting this orientation class for mainly semester 3 students. Those who are going to enter in semester 3 right now. मतलब जो एग्जाम अभी सेमेस्टर 2 के हो रहे हैं and the semester 3 that will be starting soon. So first thing about semester 3 content is that, as you know, there are three important core paper, and those core papers include intermediate micro 1, intermediate macro 1. So in the first year, that is semester 1 and semester 2, you covered introductory micro in semester 1, introductory macro in semester 2. So second year, that means semester 3 and semester 4 will be basically for intermediate level, micro and macro. And your third year, which is semester 5 and 6, that will be for advanced micro and macro. So first year is introductory, second year is intermediate level, and third year will be the advanced. So intermediate micro 1 in semester 3, intermediate micro 2 will be in semester 4. So there will be a continuity from semester 3 to semester 4. Semester 3 include basically this micro paper, macro paper, then statistical methods for econometrics, which will be converted into introductory econometrics in semester 4. So first year was your MME paper, MME 1 and MME 2. So first year the focus was basically on the maths. Second year the focus will be on the stats and the econometrics part. And two optional paper, if you have chosen data analysis and differential equation, then classes are provided for data analysis as well as for the differential equation. So these are the three core papers, your micro, macro and SME, and data analysis and differential equation will be the optional paper. So basically we are providing lectures for these 5 papers or 5 subjects. Now regarding any particular subject, the classes are basically online. If there will be some live classes, you can join that class live as well. But the classes are, some of those classes will be pre-recorded, some classes will be recorded new or fresh, depending upon the requirement in the sense if there will be a revision in the course. So if there will be a revision in the course, then the new content will be upgraded, and new content will be obviously upgraded by recording the new videos. In the absence of that, if we find that the previous video is good enough, then previous year discussion or previous year topic or previous year lecture will be uploaded as it is. So we'll be basically providing you support on all lectures. Lectures will be very comprehensive in nature. That means it will be basically explaining all the concept. After explaining the concept, the orientation of lecture will be problem solving. So we'll be solving problems in the class. If you have any concern or doubt, obviously you will be having the contacts of the respective faculty. For example, in micro and macro, you can contact me directly. Numbers are there on the website. And for physical doubt cleanse, you can come to our center also. You can see the address from our site, and obviously call before you are coming, or you can call or WhatsApp your problem. So partly that problem will be solved. We will be trying to have some live discussion class as well for your problem solving approach. So one part will be your support in terms of lecture. Apart from that, you will be getting notes for all the chapters, all the topics, and that notes will be very exhaustive so that you don't have to read the readings. You can just read your notes and you can appear in the exam. And that notes will also be including previous year questions, so you don't need to buy 10 year. All questions will be uploaded there, and discussion of those previous year will also be there. That means for 2020, 2021 जो क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर आ रखा है उनका डिस्कशन भी होगा, एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर ऑल दोस क्वेश्चन एज वेल. And the notes and lectures will certainly be upgraded if there will be a change in the syllabus. So if there will be a change in the syllabus, it will be upgraded. और अगर कोई न्यू एलिमेंट हमें लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन लास्ट की रिकॉर्डिंग में नहीं थी, इसको अपडेट करना है, तो वो फॉर दैट पर्पस ऑब्वियसली द न्यू लेक्चर विल बी देयर. So the content basically include your online lecture
notes, previous year question and updated notes as well as the lecture for these subjects, that is intermediate micro 1, intermediate macro 1, SME, data analysis and the differential equation. Now I will use this orientation class just to explain a few basic things, like if you start with the intermediate micro 1, intermediate micro 1, then in that intermediate micro 1, the syllabus of intermediate micro 1 in for semester 3 broadly divided into 2 unit. Broadly divided into 2 unit. One unit will be consumer theory. One unit will be consumer theory and second unit will be production and cost. Production and cost, that will be your unit number 2. So section A is consumer theory and section B will be production and cost. Your question is also divided into 2 sections. Section A consumer theory and section B production and cost. In consumer theory, mainly the reference book will be Hall variant. So starting from chapter number 2, budget constraints, then chapter number 3, preference, chapter number 4, utility, chapter number 5, choice, chapter number 6 will be revealed preference, then buying and selling, Slutsky equation, intertemporal choice, risk. तो वो सारे चैप्टर्स बेसिकली आपको कवर करने हैं. कंज्यूमर थ्योरी के अंदर भी वी कैन डिवाइड दैट कंज्यूमर थ्योरी ऑल्सो इन 2 पार्ट. One will be all the basic chapters. Basic chapters will include budget constraint concept, then preference, utility, choice and overall demand. तो वहाँ तक जो start के 5 chapter होंगे that will be the basic. Basic in the sense you cannot expect more question from those basic. वो basic semester 1 के अंदर भी cover किया आपने. वहाँ household का unit होता था. चैप्टर नंबर 21 पढ़ते थे मैनक्यू का, थियरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस, इफ यू कैन रिकॉल. बट यू कैन से दैट one chapter has been now expanded into 10 or 11 chapters for this consumer theory. So from basic part you expect one question, but from the application side, from the application based side, application based question means here chapters like Slutsky equation, buying and selling, intertemporal risk and uncertainty, those chapters will have a greater weightage and basic chapter will have a lesser weightage. But it does not mean कि less जो basic chapter है it will take less time. आपको cover पूरा ही करना है because internal वगैरह में आपके लिए important हो जाएगा initial lectures में. तो basic chapters and application all will be covered from Hall variant. So reference will be basically Hall variant. हॉल वेरिएंट का रिमेंबर एक टेक्स्ट बुक होगा और एक वर्क बुक है, ठीक है. एक रेफरेंस बुक होगी जो स्टडी मटेरियल आप लेंगे, उसमें एक स्टडी मटेरियल के अंदर आपके पास एक रेफरेंस बुक मिलेगी और जब रीडिंग सब बाई करेंगे तो याद रखेंगे यू विल गेट 2 डिफरेंट स्पायरल इन माइक्रो. एक तो रीडिंग वाली होगी जो इसमें चैप्टर है, चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 11 तक का कंटेंट होगा और फिर प्रोडक्शन कॉस्ट का कंटेंट. एंड सेकेंड विल बी दी वर्क बुक, वर्कबुक ऑफ वेरिएंट. तो वर्कबुक के जो क्वेश्चन होंगे उनमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हमारे वर्क बुकलेट के अंदर भी है. मतलब जब आप व्हेन यू विल गेट एक्सेस इन द नोट सेक्शन यू विल फाइंड द बुकलेट. आई विल शो दैट इन दैट बुकलेट आई हैव इंक्लूडेड द क्वेश्चन फ्रॉम द हॉल वेरिएंट, आल्सो क्वेश्चन फ्रॉम निकोल्सन एंड स्नाइडर, क्वेश्चन फ्रॉम द बैक ऑफ फॉर मैक्रो एज वेल. तो माइक्रो और मैक्रो दोनों के लिए यू विल फाइंड दैट कंबाइंड बुकलेट. So mainly for this consumer theory the reference book will be Hall variant, and for this production and cost the production cost will be covered from Nicolson and Snyder. Nicolson and Snyder for production and cost. In that production and cost, in fact you will find 3 chapters. One chapter production, second chapter cost, and one more chapter, chapter number 11 is for market sectors, profit competition market. So that means profit maximizing वो chapter होगा specifically. Profit maximization is basically explaining the market form of profit competition and some information about the input market as well. So you will end there
that is profit maximizing chapter, and in semester 4 you will start with monopoly, then oligopoly and so on. तो सेम 3 जहाँ पे एंड होगा मार्केट स्ट्रक्चर, वहाँ से सेमेस्टर 4 का माइक्रो स्टार्ट होता है. तो ब्रॉडली ये 2 पार्ट याद रखिएगा, निकोलस साइडर और हॉलबेरियन है. करंट बैच के लिए अभी सिलेबस अपलोडेड नहीं है, बट जो इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है लास्ट ईयर वाले जो आप साइट पे भी देख सकते हैं, वो अगस्त 11 2020 का है. उसके बाद कोई चेंज लास्ट ईयर भी नहीं थे. ये कंटेंट में उसका यूनिट 1 इज कंज्यूमर थ्योरी, प्रेफरेंस, यूटिलिटी, बजट कंस्ट्रेंट, चॉइस, डिमांड, स्ट्रेटजी, बाइंग, सेलिंग, रिस्क, अनसर्टेनिटी, रिवील प्रेफरेंस एंड सो ऑन. एंड चैप्टर नंबर 2 इज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट कंपटीशन. ठीक है, तो मेनली ये 2 चैप्टर बेसिकली आप कवर कर रहे हैं. वन इज टू सेक्शन रादर, वन इज कंज्यूमर थ्योरी एंड सेकेंड इज प्रोडक्शन कॉस्ट. सो यूनिट 1 कंज्यूमर थ्योरी, सेकेंड यूनिट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, एंड रेफरेंस बुक आर स्नाइडर एंड निकोलसन एंड हॉलबेरियन. विंस्टन का सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 11 ओनली फॉर रिस्क पार्ट. सो ब्रॉडली वी कैन से 2 रेफरेंस बुक है, हॉलबेरियन और निकोलसन स्नाइडर. And when you cover this macro, then intermediate macro 1, intermediate macro 1 के अंदर there are different units. So now we refer to the, ये लास्ट ईयर वाला इन्फॉर्मेशन है. 8 जुलाई 2021 की मीटिंग है. जब रिमेंबर अगर कोई भी चेंज आता है, अपग्रेडेशन आता है, वी विल इन्फॉर्म यू, और अकॉर्डिंगली जो चेंजेस होंगे वो साइट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. सो वी आर अज्यूमिंग दैट इफ देयर विल बी नो चेंज, देन द कोर्स कंटेंट विल हैव 4 यूनिट. यूनिट नंबर 1 लेबर मार्केट, which talks about wage determination, price, employment, natural rate of unemployment and natural level of output. Second unit is talking about aggregate demand and aggregate supply. Remember you completed your semester 2 with the ISLM topic. तो ISLM के उस टॉपिक को यूज करते हुए, by using that ISLM, you will derive aggregate demand here, and the reference book will be the same, Dornbush and Fisher. ISLM के लिए भी आपने डॉर्नबुश एंड फिशर रेफर कर रखा है. इनकम और स्पेंडिंग पढ़ा था, मनी इंटरेस्ट और इनकम पढ़ा है, monetary policy and fiscal policy. So after that we have to start with this chapter. In this section you can note one thing, this chapter number 5, which is 5.1 to 5.3, you have already covered in semester 2. 5.1 was monetary policy and transmission mechanism, 5.2 was fiscal policy and crowding out, and third was 5.3 was policy mix, combination of fiscal and monetary policy. So you have already covered. सेम 2 और सेम 3 को लिंक करने के लिए वो चैप्टर रखा गया, मतलब रिपीट करके रखा गया. सो ऑलरेडी जो लेक्चर सेमेस्टर 2 के थे वही सेम लेक्चर इस चैप्टर नंबर 5 के होंगे, बट चैप्टर नंबर 7 विल बी न्यू. सो विल बी बेसिकली सेइंग द यूनिट 2 विल बेसिकली स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 7. In case if you have any doubt in the ISLM topic, we will be also uploading the ISLM all lectures of semester 2 for your reference. वो कंटेंट का पार्ट नहीं है, बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सपोज यू हैव नॉट कवर्ड ISLM वेल इन सेमेस्टर 2 एंड इफ यू वांट टू रिवाइज इट, तो फॉर दैट पर्पस एक सेपरेट सेक्शन के अंदर आपको ISLM के जितने भी लेक्चर सेमेस्टर 2 वाले थे वो अपलोडेड मिलेंगे. सो यू कैन रेफर टू दैट इफ यू वांट. एंड थर्ड यूनिट विल बी इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेक्टेशन. दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट यूनिट. ठीक है, इसमें डिफिकल्टी भी ज़्यादा होगी और इम्पॉर्टेंट यूनिट भी है. एंड दिस टॉपिक विल बी बेसिकली कवरिंग टॉपिक्स लाइक फिलिप्स कर्व, adaptive and national expectation, policy effectiveness, and there will be some calculation this question as well from the Phillips curve. Phillips curve होगा, Okun's law भी होगा. तो डिटेल्स इट इज़ जस्ट अ सिम्बॉलिक, मतलब जो सिलेबस आप देख रहे हैं उसमें वो कंप्लीट डिटेल नहीं है, बट डिटेल यू विल फाइंड इन दैट चैप्टर. सो चैप्टर नंबर 8 and chapter number 9 from Blanchard, and this first unit is also from Blanchard, chapter number 6, labor market. So in fact you are reading chapter number 6, chapter number 7, chapter number 8 and chapter number 9, 4 chapters from Blanchard.
Then the fourth unit is microeconomic foundation. यहाँ पे एक important information I will share. This unit used to be the part of semester 4 macro. Semester 4 macro का part होता था, but previous year I think ये इंटरचेंज हो गया. मतलब एक यूनिट जो सेमेस्टर 3 में पहले होता था यहाँ पे, दैट यूनिट यूज्ड टू बी ओपन इकोनॉमी, और ये माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ सेमेस्टर 4 मैक्रो. तो ये स्वैप हो गया. मतलब यूनिट 4 जो माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन सेमेस्टर 4 का है वो सेमेस्टर 3 में आ गया, और सेम 3 का जो ओपन इकोनॉमी वाला यूनिट था वो आप सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे. तो अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देख रहे हो इंडिपेंडेंटली, अगर आपने मार्केट से बाई कर रखा है, तो रिमेंबर इन दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू विल फाइंड इन मैक्रो सेक्शन क्वेश्चंस फ्रॉम ओपन इकोनॉमी आल्सो, बट रिमेंबर दैट इज नॉट नो लॉन्गर पार्ट ऑफ सेम 3 कोर्स नाउ. For semester 3 microeconomic foundation, that will include consumption, that will include investment, and that will include demand for money. And the reference book has also been changed, that is Branson. तो Branson की reference book होगी यहाँ पे. तो ये important unit होगा जिसमें weightage based unit के अंदर ज़्यादा होंगे. तो consumption के content है, investment का chapter होगा, and demand for money will be there. So 3 important chapter from Branson. So there will be 4 different units in macro. So unit 1 is labor market, unit number 2 is AD&AS, unit number 3 is inflation, and unit number 4 is microeconomic foundation. Clear? So these are the 4 units for intermediate macro 1. Approach in micro and macro will be slightly different. In micro, mainly it is numerical. In macro, mainly it is descriptive. Mainly it is descriptive. It means most of the question will require description rather than calculation. But in micro, most of the question will require calculation and less question will require description. So slightly the approach in micro and macro will be different. So for micro, obviously you have to cover the workbook and additional question as well. In macro, mainly जो notes होगा, class का notes होगा, वो आपको थोड़ा learn अगर होगा, then you will be able to handle paper better. So the descriptive nature of macro will be there. It does not mean that there will be no calculation, there will be no numerical. There will be numerical in macro as well, but it will be less in terms of weightage. Clear? So this was all about micro and macro introduction. Obviously, when the class will start, it will start with micro and macro जो अलग अलग lectures है जो previously अभी तक recorded है. It will be after this orientation class. जो earlier recorded videos होंगे उससे हम start करेंगे. और जैसे जैसे अगर कोई change आ जाता है, for example your exam for semester 2 is still going on. Today is 11th of August. तो अभी आपके एग्ज़ाम अभी एक्चुअल में चल रहे हैं सेमेस्टर 2 के DU में. जब ये एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा, हो सकता है उसके बाद कोर्स का अगर कोई रिवीजन होता है, कोई अपडेट आता है तो अपडेट कर लेंगे. बट इन द एब्सेंस ऑफ दैट, अज्यूमिंग दैट कोर्स कंटेंट प्रीवियस ईयर वाला ही रहेगा, तो प्रीवियस ईयर वाले जो लेक्चर्स होंगे वो अपलोड कर देंगे. बट इट इज़ नॉट दैट ऑल वीडियो विल बी अपलोडेड at one point of time. It will be uploaded sequentially. Now come to the course part. When you buy this course online, you can buy that course online. When you purchase this on your LMS, you will be basically getting course in this form. If you refer to the content, ठीक है, आपके माई कोर्स के अंदर आपको एक सिंगल कोर्स दिखेगा. जैसे माई कोर्स के अंदर अदर यू विल, इफ़ यू हैव टेकन माइक्रो, इफ़ यू हैव टेकन मैक्रो, इफ़ यू हैव टेकन स्टैट्स, if you have taken data analysis, if you have taken differential equation, so in that my course section you will find 5 different courses. But you have taken only one course, that is micro, it will show only for micro. Or if you have taken only for macro, it will show for macro. So for example, suppose if you open this macro section, then you have to just open that view. In that you will find a previous year question, you can see, then solution, booklet, notes, lectures. So when you click the lecture, that plus sign, lecture number 1, lecture number 2, lecture number 3 will be there. If you can click any lecture, the lecture will play. Like for example previous year question. So if you click that previous year question, then
all questions from the previous year has been uploaded here. ठीक है, you can download it, print it and just maintain it, और अगर आप just online ही refer करें comfortable है, no need to print that. So in that section you will find question from macro. तो previous year के जो भी question है वो यहाँ पे uploaded होंगे. So for 2020, for 2021 and so on. ठीक है, तो पास्ट ईयर आपको प्रीवियस से मार्केट से बाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्लियरली वो देख सकते हैं आप. नोट्स वाले सेक्शन के अंदर नोट्स का जो कैटेगरी होगा, अगर वो ओपन करेंगे तो नोट्स में जो नोट्स अपलोडेड होंगे उसका पीडीएफ होगा वहाँ पे. बुकलेट में यू विल फाइंड द माइक्रो एंड मैक्रो 1. ठीक है, इसमें जो रेफरेंस बुक है वो मेंशन है सिलेबस स्टार्ट में, एंड देन चैप्टर के बैक के जो क्वेश्चन है वो लिखे हैं. मतलब चैप्टर नंबर 5 डॉन क्वेश्चन फीचर से स्टार्ट होता है, मॉन्टी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. तो चैप्टर के बैक में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे गए, मतलब रीडिंग के बैक के जो क्वेश्चन है, तो रीडिंग के बैक के जो क्वेश्चन होंगे वो मिल जाएंगे एक जगह. यू दैट मीन्स नोट्स आपने लिख लिया क्लास के अंदर, रेफरेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, रीडिंग के बैक में जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन लिखेंगे. तो एंड इन द सेम बुकलेट यू विल फाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो, उसके अंदर भी होंगे, एंड सम न्यू क्वेश्चन एज वेल. So this booklet will include micro and macro both. Similarly, a booklet for stats will also be there. You will find it in the stats course. ठीक है, and then what I said, the ISLM topic, ये सेमेस्टर 2 के जो लेक्चर हैं. तो अगर आपको डिफिकल्टी है ISLM वाले सेक्शन में, सेमेस्टर 2 का कोर्स अगर आपने नहीं लिया था, and if you want to refer to those lectures, then you can view those lectures here. ठीक है, so course is basically comprehensive. That means all solution you will find basically here. So when we explain the course for semester 3, then you can totally depend upon our lectures, notes, previous year question, their discussion, and in case of any problem and doubt you can approach us. For purchasing that course you can take it from our site, or you can call at the reception. Madam will also be sharing with you the discounted link. So I think I will just leave that number here in case if you want to contact me for any doubt, then you can call me directly on this number for any doubt regarding micro and macro. For purchasing that course you can call on 9811343938. For micro and macro you can call me. For stats you can call on this number 9891555578. You can call Amit sir directly on this number for stats. For micro and macro you can call me, and for admission you can call on any number. ठीक है, so you can call on any number for admission process. Otherwise the admission you can take it from our site also. If you open just the Bliss Point Studies, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज आपको दे जाएंगे. इकोनॉमिक्स डी सेमेस्टर के लिए आपके जो रेलिवेंट कोर्स होगा वो डी सेमेस्टर वाला कोर्स होगा, या ऑल कोर्सेज को क्लिक करेंगे, यू कैन ऐड टू कार्ट एंड बाय दैट कोर्स फ्रॉम आवर साइट डायरेक्टली ऑल्सो. ठीक है, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस एज वेल. So there are all options, but all options are basically for the online classes. ऑनलाइन में हम फीचर ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर लाइव का फीचर हो गया डिस्कशन के लिए, बट फॉर डाउट यू कैन कम ऑफलाइन एज वेल. एंड इफ इन फ्यूचर दे विल बी, इफ वी आर कंडक्टिंग दैट फिजिकल ऑफलाइन क्लास, विल इन्फॉर्म यू. दैट मीन्स अगर वो ऑफलाइन कंडक्ट की जा रही है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. बट नाउअडेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी आई विल से 95 to 97% स्टूडेंट्स prefer this online mode. It is convenient to you also, it is convenient for us also. So I think I have explained all regarding the economics on semester 3 course. So I hope you will find this orientation class useful. And for the course content, so as stated in at the beginning, the previously recorded videos will be uploaded, and some new videos will also be there. And we'll be trying to basically revise it.
मतलब it is not that all lecture will be new or all will be old. It will basically hybrid of old and new as well. And but we'll be trying to upgrade or upload new videos more and more in future. Okay. So thank you for watching this. Thank you.